Good morning, class. Today I'll start with illustration number 7 in GST. Past journal entries in each case of Mr. Gopi Chand of Kerala, assuming that CGST and SGST rate is 9% here. So I'll start with the first entry. Here it is mentioned that he is the person who is in Kerala. Purchase goods for rupee 3 lakh from Karunakaran of Chennai, Tamil Nadu. That person is of Tamil Nadu and he is doing business in Kerala. So he is doing business with another state. So when we do business within the state, at that time we will charge CGST and SCST, or out of the state we will use IGST. So here the first journal entry is purchase account debit, input IGST debit to Kanukaran, because the goods are purchased on credit basis. 3 lakh is the amount of goods, 9 and 9, 18% is the rate of GST, so it is total 54,000. So 3 lakh 54,000. Second is purchase goods for rupee 50,000 from Ganesha of Kerala. That person is of Kerala. Now as on third, he purchased again on credit basis. The journal entry is purchase account debit. Now the goods are purchased within the state, तो हम चार्ज करेंगे input CGST debit, input SGST debit to Ganesha. The amount of goods are 50,000. 9% is 4,500. 4,500. Total is 59,000. This is about the second entry because the goods are purchased within the state. The next one is the third transaction. Look at the third one. Sold goods costing 80,000 to Naidu of Hyderabad. Again, this is in another state. He sells now at a profit of 25% less 10% trade discount. So as per this, firstly we will pass out the entry as on 10th of April. He sold goods to Naidu. So the journal entry is Naidu debit to sales account. Now the goods are purchased outside the state, so we will use the word IGST because the transaction is not in the state. Now find out the amount. 80,000 is the amount of goods. It's 25% profit, 10% trade discount. So it's your choice कि आप पहले trade discount less करेंगे या profit earn करेंगे. तो 80,000 का 25% profit is 10,000. सॉरी इट इज़ 20,000. तो 80,000 में 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया हमने, हुआ वो 1 लाख रुपी. नाउ द 10% ट्रेड डिस्काउंट इज 10,000. सो द अमाउंट ऑफ गुड्स इज 90,000 rupees. So here he sold goods for rupee 90,000. The rate of GST is 9% each. So 90,000 total 18% is 16,200. So total amount of goods sold is 1,06,200 from Naidu. Next, as on 15th, he sold goods to somebody, Kottayam. He is in Kerala. The amount of such goods is 250. He earned 60% profit, 15% trade discount, and the person made the payment by check. So we received the check as on 15th of April. For the check amount, the transaction is bank account debit. He made the sales on cash basis, check basis, to sales account, and the business is done in Kerala itself. So we will charge output CGST to output SGST. Now find out the amount. 2,50,000, 60% is profit and 15% trade discount. So firstly, find out 2,50,000, 60% profit. So he earned a profit of 1,50,000. So the sales is of rupee 4 lakh. Now it's 15% trade discount. 4 lakh 15% is 60,000 trade discount, means the amount of sales is 340. So 340 is the amount of sales. 9% is CGST. 349% is 30,600 and 9% is SGST. It is again 3,600. So the total amount which we received by check is 4,01,200. Next, he paid advertisement charges of rupee 8,000 in cash. Advertisement expense is considered under GST. So as on 16th of April, advertisement expense debit
input CGST debit, input SGST debit to कैश अकाउंट, बिकॉज एडवर्टीजमेंट के ऊपर GST चार्ज होगा. 9% is 720, 720 total is 9440. The next is purchased a computer for office use 30 and the payment made by check. He purchased an office computer. So this is as on 20th. Office equipment. Journal entry is office equipment debit. On this again we will pay GST. Input CGST debit. Input SGST debit to bank account. The amount of computer is 30. 9% is 2700. 2700 total is 35,400. This is the amount of this transaction. The next we have proprietor withdraw rupee 10,000 for his personal use. Now he withdraw cash for his personal use. तो अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करते हो उसके ऊपर कोई भी GST चार्ज नहीं होता. जर्नल एंट्री इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. He withdraw rupee 10,000 for his personal use. There is no GST charge on such kind of transactions. Next one we have, in the last you have to make the payment of GST. Settle the account now. As I said, firstly find out input IGST. Then find out the amount of output IGST. Then you have to find out input CGST, input SGST, and output CGST and output SGST. Let's find out the amount of each of these transactions. First is, in the first entry we have input IGST is 54,000. So you will write input IGST 54. Then we have input CGST and SGST. In the second transaction it is 4,500, 4,500. Input CGST and SGST, it is 45, 45. As per the third we have output IGST. So output IGST is 30,600. Then we have again input CGST, SGST as 720, 720. Again in the next we have input IGST, CGST 2,700 plus 2,700. So we don't have any amount for output CGST or SGST. They are only input. So it is 54, 54. And the third one is, if you total all the transactions, they are total 7920, 7920. So leave this one. इनपुट का मतलब है हमने किया है पे, आउटपुट का मतलब है हमने किया है कलेक्ट. सो दिस इज़ ऑल्सो पेड. सो व्हाट वी विल डू, हम जो हमने कलेक्ट किया है उसको पेड से सेटल करते हैं. इन दिस वन आउटपुट कलेक्शन इज़ लेस बट द पेमेंट इज़ मोर. सो फर्स्टली हम करेंगे एंट्री आउटपुट IGST डेबिट टू इनपुट IGST. We will be able to cover only 30,600 from the output as input IGST. अब आपके पास input IGST total था 54,000. Out of that you will cover only 30,600 from the output IGST. Means this amount is left. It is 23,400. This amount is to be covered from the next one. Next one means from the next output collections. Here we don't have any output collection for CGST. Sorry, one thing is left here. As in the third entry we have output CGST, SGST also 3,600. So they are not blank. It was left by mistake. Output we have 30,600. So you will use the output CGST first. The amount of output CGST is 30,600. This is again the collection. So output CGST is 30,600. अब मेरा इनपुट जो मुझे यूज़ करना है वो कितना रहेगा. इनपुट IGST इज़ यूज्ड फर्स्ट. इट इज़ 23,400. अब हम इसमें से यूटिलाइज़ करेंगे हमारा जो आउटपुट के बाद हमारा इनपुट
Sorry children, in the previous video the amount was written wrong by me for output IGST. In the previous one I had written the amount of output IGST as 30,600, but actually it was 16,200. So we will do the settlement as by writing 16,200. And the amount of input CGST and SGST, obviously input CGST and SGST amount is same, so you will write down the amount of input CGST and SGST, correct? The amount for input CGST and SGST is 4,500 plus 720 and plus 2,700, it is 7,920 for input CGST and SGST. Now the amount of output CGST is 30,600 here, जो मैंने गलती से output IGST में रिकॉर्ड कर दिया था. So you will settle down the first output IGST to the input IGST. It is only 16,200. So we will be able to cover only 16,200 from the output IGST to input IGST. Now 54,000 में से 16,200 कवर करने के बाद अभी मेरे पास बच गया. So the amount of output IGST is covered with input IGST 16,200 only. So 54,000 में 16,200 कवर करने के बाद हमारे पास बचा है 37,800 as input IGST, which we will cover from the now next one, which one we have output CGST. Output CGST है मेरे पास total 30,600 और मुझे कवर करना है 37,800. So again this is more as compared to 3,600. So output CGST is fully covered with input IGST. अभी भी मेरे पास input IGST कवर करना रह गया, वो कितना 7,200. So that we will cover from the output SGST. Output SGST we have 30,000 again 600. Firstly we will cover two input IGST, it is 7,200. Then we will cover input CGST, it is 7,920. Then we will use the amount of input SGST. SGST is input SGST is again 7,920. We will not cover the amount of input CGST with the output SGST because input से सिर्फ CGST से सिर्फ CGST ही कवर हो सकता है, SGST में से CGST को कवर अप नहीं कर सकते. तो हम यहाँ पर लिखेंगे input SGST 7,920, no need to write it again, and the leftover amount is which is 15,480 which we have to deposit in the bank. So please remember in this question there is little bit confusion once again. यहाँ पर हमारे पास फर्स्टली आउटपुट IGST बहुत कम था और इनपुट बहुत ज़्यादा था. सो फर्स्टली हमने आउटपुट से इनपुट को यूज़ किया 16,200. 54 में से कवर करने के बाद अभी मेरे पास बच गया 37,800 इनपुट IGST, जिसको हम CGST से कवर करेंगे. CGST भी कम है अगेन 3,600, दिस इज़ मोर 37,800, तो वो पूरा यूज़ हो गया. अभी भी मेरे पास IGST बच गया 7,200, जिसको हम SGST से कवर करेंगे. SGST है 3,600, उससे मैंने 7,200 का IGST कवर किया. प्लीज़ रिमेंबर SGST से CGST कवर नहीं हो सकता. सो इनपुट CGST को कवर अप नहीं किया जा सकेगा इस साल, उसको हम नेक्स्ट ईयर अगेन जब हमारा आउटपुट CGST आएगा उससे कवर अप करेंगे. सो वी विल कवर ओनली इनपुट SGST 7,920 and the leftover balance is to be paid by us in the government bank account. So that's all about this illustration. Look at the next one in your book only. Next illustration number 8. You need to pass the entry in the books of Deepak of Gujarat for the following transaction. First is as on 2nd of Feb he purchased goods from Anupriya of Gujarat. This is within the same state. तो obviously हम CGST और SGST ही चार्ज करेंगे. So the journal entry is purchase account debit, input CGST debit, input SGST debit to Anupriya. 250 is the amount of purchase और आपका 99% से 22,500 आपका output CGST और SGST का amount. Second entry is purchase goods from Rana Rathore of Rajasthan. Now this is in the another state. तो यहाँ पर हमारा चार्ज होगा IGST. It is clearly mentioned here 12% से. The journal entry is purchase debit, input IGST debit to Rana. 3 lakh का 12% 36, total is 336. Next one we have as on 10th.
सोल्ड गुड्स टू गुरदीप ऑफ गुजरात, दिस इज़ विद इन द सेम स्टेट, तो हमारी एंट्री होगी गुरदीप डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST 2 लाख के ऊपर 99% से 36 टोटल आपका टैक्स हो गया। नेक्स्ट वी हैव पेड रेलवे फ्रेट, दिस इज़ माई एक्सपेंस, सो इसके ऊपर इनपुट GST चार्ज होगा। फ्रेट डेबिट 15 इनपुट CGST इनपुट SGST टू कैश एज ₹17,700 टोटल। Next we purchase computer for business purpose on credit basis, again we have to charge GST also on this. So entries office equipment debit input CGST input SGST debit to Dell Limited total 80,000 के ऊपर आपने 6% से इसको शो कर दिया। नेक्स्ट है आपकी 24th को सोल्ड गुड्स टू गंगाराम ऑफ यूपी गुड्स फॉर ₹420 अगेंस्ट चेक विच इज़ डिपोजिटेड इनटू द बैंक। अब ये यूपी का है, इसके ऊपर IGST चार्ज होगा। बैंक से ट्रांजेक्शन है तो जर्नल एंट्री होगी बैंक डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST टोटल इज़ 495,600। Next we paid for broadband expenses as ₹10,000 by check. So these are my expenses debit input CGST input SCST debit to bank account because the payment is made by the check. So this is about up to the journal entries. Now in the last you make the final payment of GST. So let's discuss how we will make the final settlement now. लुक एट द सेटलमेंट, मैंने सभी के अमाउंट यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। इनपुट IGST फ्रॉम द जर्नल एंट्री 36, आउटपुट IGST 75,600, इनपुट CGST SCST दे आर सेम एज 29,250 and output CGST and SCST again this is same 18,000. So we will cover firstly output with the input. यहाँ पर output आपके पास enough amount है, input सिर्फ हमें 36 cover करना है, so cover up the amount of 36,000 as input IGST. Now you will cover output CGST debit, output SGST debit to input CGST and to input SGST. Here जो आपका input है output है सिर्फ 18,000 है, 18,000 है तो हम सिर्फ 18,000 ही कवर कर सकते हैं as CGST and SGST. नेक्स्ट अमाउंट जो हमारा 29,250 में से 18 लेस करके बच गया, ये अमाउंट हम नेक्स्ट ईयर के GST से कवर अप करेंगे. सो दिस इज़ अबाउट दिस इलस्ट्रेशन. So the second one is sold goods by Brijesh to Chandra for ₹120. So in the books of Brijesh, we will pass out the journal entry from Chandra. So he sold the goods to Chandra. The journal entry is Chandra to sales to output IGST 120 because the transaction is out of the state. So we will charge IGST here 120 के ऊपर आपका 9918% से 21,600. एंड दिस एंट्री इज़ फॉर द फर्स्ट वन. यहाँ पर आपने जो अंकित ने ब्रिजेश को सेल्स की थी, तो अंकित के लिए वो सेल्स थी बट वो ब्रिजेश के लिए क्या है, परचेज़ है. तो उसी एंट्री को रिवर्स करके इन्होंने परचेज़ में शो किया. परचेज डेबिट इनपुट CGST डेबिट टू अंकित एज 59,000. नाउ द थर्ड वन इज सोल्ड गुड्स बाय चंद्रा टू दिनेश ऑफ गुजरात फॉर ₹150. अब चंद्रा ने दिनेश को आगे वही गुड सेल्स कर दी. तो अब हम चंद्रा की बुक्स अगर बनाएंगे तो फर्स्टली जो चंद्रा ने परचेज़ की थी ब्रिजेश से, उसके लिए चंद्रा की बुक्स में एंट्री होगी परचेज डेबिट इनपुट IGST टू ब्रिजेश विद द सेम अमाउंट 120, 21,600 एंड 141,600. नाउ अब वही गुड्स चंद्रा ने आगे दिनेश को सेल्स की. सो द अमाउंट इज फॉर द जर्नल एंट्री इज दिनेश डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST. For this, the amount of transaction is 1,50,000. The rate of GST is 9%, 9%, 13,500, 13,500, and the total is 170,700. Because he is the person who is Chandra and Dinesh, they are of the same state Gujarat. और इससे प्रीवियस वाली ट्रांजेक्शन में जो ब्रिजेश है और जो चंद्रा है वो डिफरेंट स्टेट से वेरी कर रहे थे. बिकॉज ब्रिजेश इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र एंड चंद्रा इज़ ऑफ गुजरात. सो वहाँ पर हमने IGST चार्ज किया था बट यहाँ पर CGST और SGST चार्ज होगा. द लास्ट वन गुड सोल्ड बाय दिनेश टू एकता ऑफ राजस्थान. नाउ दिस इज़ अगेन वेरीज फ्रॉम अनदर स्टेट. 150 की इतना प्रॉफिट अर्न करके उसने सेल्स किया. तो इन द बुक्स ऑफ दिनेश फर्स्टली जो उसने चंद्रा से परचेज़ की थी उसकी एंट्री होगी. जो सेल्स चंद्रा की बुक्स में थी दिनेश को, अब दिनेश की बुक्स में वही चंद्रा से परचेज़ हो जाएगी. सो द जर्नल एंट्री इज परचेज डेबिट, इसको रिवर्स कर दिया इनपुट CGST इनपुट SGST टू
Chandra as rupee 177. Now he sold goods to Ekta outside the state. So the journal entry is Ekta debit to sales to output IGST. The amount of goods is 150. इसका 33% प्रॉफिट अर्न किया तो 2 लाख टोटल 150 में प्रॉफिट अर्न करने के बाद, और IGST की रेट है आपकी यहाँ पर 18% से 2 लाख का 18% इज 36. सो द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इज 2,36,000. नाउ लास्टली व्हेन वी विल प्रिपेयर द बुक्स ऑफ एकता, तो एकता के लिए वो क्या हो गई, परचेज हो गई, तो रिवर्स हो जाएगी एंट्री परचेज डेबिट इनपुट IGST टू दिनेश 2,36,000 and total is 2,36,000. I hope this is clear to you. बिकॉज अगर मैंने किसी पर्सन को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने राम को अगर गुड सेल्स की हैं तो वो मेरे लिए सेल्स हैं, बट राम ने तो मुझसे परचेज़ की हैं, सो फॉर राम इट इज़ परचेज. तो अगर मेरे लिए कोई भी ट्रांजेक्शन सेल्स है तो वो उस पर्सन के लिए परचेज है. This illustration is based on such things. We will not do any kind of settlement related to GST because only one transaction is there for each and every party. So you need to prepare the different books, different journals for each and every person here. So that's all about this GST chapter. It is very important chapter. Again, I am saying to you, and small section of this GST will be used in the further chapters, in the next chapter which we are using after that GST. So you will complete this chapter with a complete thorough study of this chapter. It is important for you to read and revise and understand all the concept of GST, whether it is CGST, SGST or IGST. I hope you will be able to understand the videos now. So please watch the videos very carefully and sort out the exercise question with the help of illustration. Thank you and take care.